Hello dear students, I have come back with my notes on vector algebra. So first topic is vector addition. So there are two laws of vector addition. First law is parallelogram law of addition and the second one is law of triangle law of addition. Now look here, if there are two vectors A and B, they are adjacent sides of the parallelogram. They are representing adjacent sides. Then the addition of these two vectors will be represented by the diagonal. So look here, it is written there, if two vectors A and B are represented in magnitude and direction by the two sides of a parallelogram, then their sum is represented by the diagonal of the parallelogram, which is co-initial with the given vectors. Look here, these vectors, this vector is starting here, so this becomes the co-initial with them, right? So O is one vector A, AB, OC is another vector B. So they are initiating from O. Then this diagonal is going to be the sum of the two. Now look here, this A is equal to this B is equal to B. Opposite sides are equal. It is written here, we know that opposite sides are equal and parallel. So AB is equal to OC in magnitude, and they are representing the vectors in the same direction, same magnitude is there, they will be equal. So OC will be equal to AB. Now in triangle this, OA plus AB will be equal to OB. It is as per the law, sum is represented by the diagonal. Diagonal is OB. So the sum is represented by diagonal. Diagonal is OB. So ये दोनों वेक्टर्स का सम क्या होगा? OB के बराबर होगा. So now look here, there is another law of addition that is known as triangle law of addition. These are two sides of the same coin. Now look here how I have represented them. There is a one fish, you can take it, one fish is here, ये इसकी टेल है, ये हेड है. ये दूसरा फिश है, उसकी टेल इसके हेड में, माउथ में मतलब, और ये जो हेड है इसका. अब यहाँ से जो है, ये यहाँ से चालू हुआ है प्रोग्राम, यहाँ पे आके ख़त्म हो गया. तो दिस रिप्रेजेंट्स द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स. अगर ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, this will be the addition because it is coming on the opposite side. So as per the definition, if two vectors are represented in magnitude and direction by the two sides, look here, OA is one side, that is vector A, AB is another side, that is vector B, then OB will represent the addition. It is coming in the opposite direction. These are in the same direction, that is coming in the opposite direction. The two sides of the triangle taken in same order. Look here, the same order means same direction. Then the sum is represented by the third side, that is OB. So this is also known as triangle law of addition, and these are the same. So we can do addition by parallelogram law, we can do addition by triangle law. Later on we will take up questions and you will come to know how simple it is. Now let us go to the next one. Next one is, we will take up subtraction of vectors. Now look here, this is vector A, one side, this is vector B, it is this sum. Now if B
दिस बी इज फ्रॉम ए टू बी. अगर हम उल्टी डायरेक्शन में आ जाएंगे, सेम मैग्नीट्यूड ले लें जितना बी का है और अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएं, तो ये माइनस बी बन जाएगा. अब इस ट्रायंगल में चलेंगे, इन ट्रायंगल ओ ए बी में तो देखिए ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी, दैट इज द एडिशन फार्मूला. अब ओ ए डी में चलते हैं. अब ओ ए डी में देखिए आप, ए डी जो है वो ए बी का रिवर्स डायरेक्शन में है, दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन. सो ये अगर बी है तो ये क्या होगा, माइनस बी. ये ए है, ये बी है, दे आर इन द सेम ऑर्डर. Look here, they are going in the same direction. However, this is coming from the opposite direction. So OD will represent A minus B. अब देखिए एग्जाम्पल है, A is this, B is this. अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है. क्या करना है, यहाँ देखिए इसके जो कंपोनेंट्स हैं 5, 6, 7 ऐसे लिख दो. इसके कंपोनेंट्स हैं 2, 3, 5. अब सब्ट्रैक्ट कर दो. 5 minus 2 3, 6 minus 3 3, 7 minus 5 2. So next topic is multiplication of a vector by a scalar. Now look here, A is a vector and lambda is a scalar. Lambda is any number, scalar you know is a number. Now यहाँ पे हमने lambda 2 ले लिया. So this length of B, you look here, it is double of A. So same way these vectors are parallel vectors, so it will be double of A. Same way it is half of A. Same way it is in the opposite direction, it will be minus half of A. This is 3 times A and this is 4 times A. So lambda A का magnitude will be equal to this lambda into magnitude of A. Now look here, supposing A is 2, 3, 4 and lambda is 5. 2, 3, 4 means 2i plus 3j plus 4k. Now we want to find 5a. So इसको पहले 5 से मल्टीप्लाई कर दो, it will become 10, 15, 20. अब इसका आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ए का मैग्नीट्यूड निकलेगा 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज √29. और 5a का क्या होगा, 5 टाइम्स हो जाएगा 5√29. सो दिस इज हाउ वी विल फाइंड आउट. नाउ लेट अस गो टू नेक्स्ट. नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर. इफ आई आस्क यू व्हाट आर द बेसिक vectors, basic vectors are unit vectors I, J, K. They are the basic vectors. So I is on x-axis. Look here, I is on x-axis, J is on y-axis and K is on z-axis. ये 1 यूनिट है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x तो 1 होगा, यहाँ पे x एक्सिस पे y 0 होता है, z 0 होता है, तो इट विल बी 1 0 0. सिमिलरली j इज अगेन ए यूनिट वेक्टर, इसकी लंबाई कितनी होगी, 1 होएगी. सो y वाला पार्ट 1 होगा, x और z वाला 0 होगा. सिमिलरली दिस इज k वेक्टर, दिस इज ऑन द z एक्सिस, तो z वाला 1 होगा, बाकी सारे 0 होंगे, 0 0 1 हो जाएगा. सो these are the components of the basic vectors or unit vectors. Now let us go to find the components of a position vector. P is any point in the space or 3D. इसके coordinates हैं x, y, z. If somebody asks you where is x, x is on the x axis. So ये x units है, तो unit क्या होता है, यहाँ पे i होता है, सो एक्स आई, और वाई पे कितना है, ये वाई जे के बराबर है, इसके बराबर ये वाला है. और फिर यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये देखो परपेंडिकुलर है, ये पैरेलल हैं, इक्वल होंगे, तो दिस इज जेड के. सो दिस पॉइंट विल बिकम एक्स वाई जेड. लुक हियर, एक्स यहाँ पे
y यहाँ पे और z यहाँ पे. ऑलवेज गो लाइक दिस. पहले एक्स एक्सिस पे चलते हैं, फिर उसके बाद वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रा करते हैं. जब भी हम 9th में 10th में जो पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, पहले एक्स एक्सिस पे देखते हैं कितना है, फिर वाई एक्सिस के पैरेलल जाते हैं. सो लाइक दिस. यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर चलना है, फिर वाई एक्सिस के पैरेलल जाना है, फिर जेड एक्सिस के पैरेलल. So it will become x, y, z. Now look here, this is OP vector. This will become OA plus OB plus BP. So OC opposite direction से आ रहा है, OP opposite direction से आ रहा है. It will be sum of these two. Now let us go to the next one. Next one is, look here, vector joining 2 points. Supposing you want to find the vector AB, coordinates of A are x1, y1, z1, coordinates of B are x2, y2, z2. So we want to find AB. So by applying the triangle law, we will find that AB is equal to x2 minus x1, y2 minus y1, and z2 minus z1. So similarly, now let us look here, the section formula is there. P and Q, these are 2 points. R is a point which is dividing it in the ratio of m is to n. So what we will do, we will write it here like this. P है, Q है, ये m is to n है. यहाँ से तोप चलेगी, इस पे जाके लगेगी, यहाँ से तोप चलेगी, इस पे जाके लगेगी. तो we will get x is equal to m x2 plus nx1 over m plus n. Similarly, we will get y and z. This is for internal. External में साइन माइनस के हो जाते हैं. Thank you very much. Thank you very much for viewing the videos.